Can you see my screen? Yes. Okay. Now, what was the report name last we created? ZS 123. चलो ठीक अच्छे देख मु बुझाऊँ आमर फास्ट कौन है लोकल स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन इंटरनल टेबल डिक्लेरेशन वर्क एरिया डिक्लेरेशन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन माने देखो तुम जब गोटे जिन ऑब्जर्व कर फास्ट टॉप रे है टॉप रे कौन रहा तुम सब डिक्लेरेशन रहा मुझे सब जा लिखी दीची आम डिक्लेरेशन पार्ट फास्ट ऑब्जर्व करो कोडिंग देखो मु तमे तमे पर ऑब्जर्व करिवो कोटा मु तळे लिखिले हबो न नै बुझि पन नै तमे से तळे लिखि भी ट्राई करो होउछि नै देखो मु कहूनी जे सेटा हबो कि हबोनी तमे ट्राई करो तमे जत्ते माने रिसर्च करिवो तमर सेते कांसेप्ट क्लियर हबो किंतु फास्ट रे तमको सक्सेस हे जो ता पर ता घंटो न होले तमे सक्सेस हे नथिबो घांटी हबो नै तमे बुझि परिबो है ना मु कौन कल देखो फास्ट जेति की डिक्लेरेशन पार्ट मु फास्ट ऊपर टॉप रे कर देली तापर मु कौन करली मु जो इंटरनल टेबल ला क्रिएट करिली ताकू मु कौन कली ये सिलेक्ट करी रे यूज कली मु फास्ट कहली फास्ट आमे डिक्लेयर करबे माने तमे जतरो जन्म हलो तमको नाटा दियाला माने तमको से समय डिक्लेयर करा हले जे भाई तमो ना विराज तमे माने दुनिया लोक पोस्ट जान देले जे मो ना विराज रे बापा माने तमे डिक्लेयर हे गलो तापर तमको यूज करा हला तमको स्कूलिंग सरला कॉलेज सरला तमर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सरला तापर तमे आउथरे सॉफ्टवेयर ऊपर आसिला माने कोन तमको यूज चाली छी है ना तमर कोन चलछ माने तमे यू आर इन अंडर प्रोसेस तमे प्रोसेसिंग रो छ से सिलेक्ट करिरो काम कोन मु गोटे टेबल रो मारा रो फ्रॉम मारा देखो सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट तुम जब इंग्लिश स्टेटमेंट पूरा बुझिलो माने किछ नै एथरे सबुड मन रखो जावा ओरेकल डॉटनेट जेते की लैंग्वेज अछि ना सबुड इजी लैंग्वेज एसएपी रो हमें के कंसल्टेंट हमें टेक्निकल कंसल्टेंट वी आर ए डेवलपर वी आर ए अबाप कंसल्टेंट ठीक अछि सबुड कोडिंग सहज मन रखो है तुम ना डिक्लेयर है तापर तुम सब स्कूलिंग कॉलेज पे एडा तुम सेलेक्ट करी रे तुमको यूज कराला है जब पर्यंत तुमको तुम पाखरे किछि गुटे आसीनी फ्रूटफुल जिंस आसीनी एथरे कोन आईटी मारा भीतर कोन होला तमरो किछि गुटे जिंस आसी गला है आसीला परे ताको हम कोन करबा किछि जे तापर तुम दुनिया हाइलाइट हेला रा तुम चाकरी पाइ गेल रे बोले कोने तमरे सब जिंस सब हे गेला कोन होला तापर तुम कोन करला तुमको डिस्प्ले कराला लोक आगु है एडा डिस्प्ले माने तुम पाखे कौन कौन अच्छी कौन कौन नाही तुम एथरे डिस्प्ले करबो बाय एग्जीक्यूटिंग एडो के एग्जीक्यूट बटन कहंती एग्जीक्यूट करलो तुम गुड स्पेसिफिक रिकॉर्ड दरकार 477 रो रिकॉर्ड दरकार टेस्ट करलो माने कोन होला तुमको एएलवी ABAP लिस्ट व्यूअर तार फॉर्मेट रे तमर आउटपुट आसिला हैला मोर पर्टिकुलर मटेरियल नंबर टा 477 टाइप ZEPA मु दिडा फील्ड नै छी दिडा फील्ड आसिला तमे 10टा फील्ड नै प्रैक्टिस करियो हैला फास्ट फ्लोडा बुझिलो कोडिंग किछि कष्ट नै सबुड सहज आकाश क्लियर ना फास्ट डिक्लेरेशन करेबा पड़ियो नै वेरी गुड फास्ट डिक्लेरेशन हैला डिक्लेयर करले ना तमे गोटे जिनिस डिक्लेयर न करिल के जाना पड़ियो मु एबे सपोज एडा को बंद कर देली ए लाइन टा को मु बंद कर देली कमेंट कर देली हेले आईटी मारा बेली गुटे पिला के रहिबोनी ताकू कहबो कि अरे से आकाश टा कहलो गाड़ी आने आकाश बेली पिला के नथियो बुझ पालो ना एबे मु कहबी सीनु को ए सीनु तमे आकाश को कहि दबो गाड़ी आने पे जीवो एग्जांपल बेले आकाश बेली पिला के नथियो हेले सीनु का कहयो
फास्ट बुझ गोटे कॉन्सेप्ट बुझ है सीन बोले फास्ट तुमको सीन को कहया पूर्व आकाश को तुम गोटे पिलाटी रख जानी अच्छे आकाश बोली गोटे पिलाटी अच्छे माने आकाश को तुम डिक्लेयर कर कॉन्सेप्ट क्लियर हो फास्ट रे कोडिंग ना किसी मन रखनी कोडिंग ना ता थ्रू हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तापर कोडा फास्ट डिक्लेयर करियो है ना माने तमे जो जिनिस जन को यूज करियो मु एबे आकाश को यूज करली माने आकाश को फास्ट डिक्लेयर करबी तापर आकाश कौन कला मु लास्ट को प्रशंसा करी जे आकाश टा भलो पिलाडा भलो जानिछि मते बहुत जिनिस हेल्प कला तापर मु ताकू उडे आउटपुट हिसाब से कौन उडे दिया बुझ पालो ना से को टाइप रो काम कला कौन नै है ना ए टाइप रो होची रिपोर्ट कोडिंग किछ नाही कोडिंग रे सबुर सहज क्लियर आज मु तुमको आउची एक्स्ट्रा जिनिस कहबी है ना एक्स्ट्रा जिनिस कोन मु तुमको आज गोटे जिनिस बुझेबी सिलेक्ट ऑप्शन रो काम कोन पैरामीटर रो काम कोन मु तुमको ऑलरेडी कहि छि किंतु आउट के आज मु क्लियर करबी है ना सिलेक्ट ऑप्शन पैरामीटर सुशांत भाई हां बापुन आज क्लास केते 5th डे हला कि ने क्लास टिके हे जाई छि प्राय गोटे 7-8 दिन हे जाई छि मते रे फंडामेंटल क्लियर कर देन ना मु मझा मझी पळे असले फंडामेंटल मु तुमको ये क्लास पर क्लियरली मु डिस्कस करबी है ना आज्ञा तमे खाली एबे जो सुनियो बेले के सुनी दियो है ना क्लियर आज्ञा, तमे एबे हे परियो ना काई बेले ऑलरेडी टिके क्लास हे जाई छि मु तुमको खाली समय रे बुझेबी अच्छा हो बुझ पालो ठीक अछि ओके ओके एबे तुम खाली इस काम नै बेले सुनी दियो खाली है ना हो देखो फास्ट आसले गोटे सिलेक्ट ऑप्शन हाँ सिलेक्ट ऑप्शन माने ए जगह गोटे गोटे तमरो इनपुट सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइन रो गोटे पार्ट हला इनपुट सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइन रो गोटे पार्ट कौन पार्ट गोटे हला सिलेक्ट ऑप्शन रो काम कोन इट इज ए रेंज टेबल इट इज ए रेंज टेबल मन रखो सिलेक्ट ऑप्शन टा गोटे टेबल टाइप रो माने रेंज माने कोन 1 टू 10 20 टू 100 माने कोन सेटा गोटे रेंज तमे ये रेंज भितर गोटे तमे डिफाइन करि पारियो इट इज ए रेंज टेबल व्हिच is created by SAP मतलब standard will create a range table automatic when you are writing a code select option suppose you are writing a code select option automatically SAP will create a range table no need to do anything माने तमे किछ एक्सट्रा दरकार नै खाली सिलेक्ट ऑप्शन लिखि दियो ये उडा रेंज टेबल हे गला के क्रिएट करला SAP क्रिएट कर दला स्टैंडर्ड क्रिएट कर दला है ना व्हिच इज क्रिएटेड बाय SAP बाय डिफॉल्ट ठीक है एटा उडा रेंज टेबल मन रखो नेक्स्ट उडा ऑप्शन अछि पैरामीटर वो एठी देखिए जी पैरामीटर माने कोन it is a single input field माने कोन ये केवल हमें गोटे सिंगल इनपुट ही दे परिबा हम एग्जांपल रे देखिबो एटा हम एग्जीक्यूट करली मटेरियल नंबर हो तमरो सिलेक्ट ऑप्शन रेंज टेबल मु सपोज 1 टू 10 माने गोटे रेंज हमें डिफाइन करि परिबा मटेरियल टाइप कोन हला केवल गोटे सिंगल इनपुट आगे दबा आमे आ गुचे रेंज दे परछे ना मल्टीपल इनपुट दे परछे दे परने एडा गोटे सिंगल इनपुट इट इज ए सिंगल इनपुट फील्ड है ना गुड अछि रेडियो बटन माने कोन चेक बॉक्स देखिछो ए सॉरी राउंड हेगी
parameters RAD1 type radio button group GRP1 activate syntax तुम मन रखियो तो मन रखियो गूगल कर दियो गूगल रे मिल जो syntax मैं भूल भाल मार देली मैं भी ठीक नहीं मैं श्योर नहीं देखो radio button group only contains only one parameter सी कहूची तमे गोटे ग्रुप बनले किंतु सिंगल अछि ता तो तुमको मल्टीपल क्रिएट करिया पड़े तो रेड टू रेडियो बटन ग्रुप GRP1 एक्टिवेट है एक्टिवेट तुम जो एटा एग्जीक्यूट करबो ये टाइप रो तुम ऑप्शन देखिथिबो रेडियो बटन रेड 1 एटा क्लिक करले रेड 2 तुम देखो एटा एनी वन कैन सेलेक्ट एटा मल्टीपल सिलेक्शन केबो हबो नै हैला रेडियो बटन ग्रुप it can be select only one at a time तमे माने देखिबो एडा उठ हबो रेडियो बटन 1 मन कर मु कोन करले गोटे रिक्वायरमेंट आसिला जदि मु रेडियो बटन 1 सिलेक्ट कली मते गोटे प्रोग्राम दरकार कि गोटे आउटपुट दरकार मु मन को रेडियो बटन 2 सिलेक्ट कली मते आउ गोटे प्रोग्राम दरकार माने तमे ता बेस ऊपर कोडिंग करिवो हैला रेडियो बटन ए टाइप रो कांसेप्ट देखो एनी वन कैन सिलेक्ट तमे देखुतबो सॉफ्टवेयर ऊपर सब जागो आसीबो जागे ऑप्शन तमे क्रिएट करिवो तमे तमे गोटे डेवलपर हैला तो यू ओनली कैन डेवलप दिस टाइप ऑफ थिंग्स बुझे आ गोटे जिंस अछि चेक बॉक्स check box it can be select multiple it can be select multiple at a time yes hello ता पाएंगे केनी parameters chk1 edge check chk2 edge checkbox देखो ये टाइप एडा चेक कर पारिबो एडा चेक कर पारिबो एडा चेक कर पारिबो तुम देखिने सब जाको सॉफ्टवेयर रे माने ए मते ये दीडा चेक करले मते ए आउटपुट दरकार ए जोड़ा जोड़ा चेक नथिबो सेडा सेडा मु करबिनी ए टाइप रिक्वायरमेंट सब आसी हैला रेडियो बटन चेक बॉक्स हैला जनरली एता आगा मैक्सिमम आसी ये चारिटा तमरो दरकार रेंज टेबल सिंगल इनपुट फील्ड तापर रेडियो बटन हैला एनीवन कैन सिलेक्ट और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए check 1 check 2 check boxes these are the check box and how to do the rename of that I told you already go to the text elements click on selection text here suppose check 1 check 1 is suppose your download report something check 2 suppose you have like upload okay check 3 suppose SK any name you can give that nothing like that okay. Here also I'm any name just
But real time example I'll give you later, huh? No problem. If you will change it here, then go back and execute. Name it should become like this: download report or upload or ye check, anything you can like this. You can assign any names. Clear? Okay, chalo. Next. And one more thing, there are many options are there, like suppose I'm executing here. If you will see, this is like, it looks like a, something empty. So if you want to block in the sense you want to put a block in these two, radio button in one block and checkbox in one block. How to do? Yeah, in after selection screen. In of block name BLK1. Suppose I'm giving with and title text 001. Okay, and after this selection screen and block 1, because this block opened here, begin here and here. Simple. And just save. Just double clicking on text 001. That means it will create a text element. Okay. Directly it will go to the text element. Here you can enter input and screen. Okay, go back. If you will see here, I'm activating the object. Execute. Here you can see like this, it will come. Input selection screen. And this is a block. Actually, this is a new thing. Maybe you will not split. That means you cannot identify maybe, but in your system, you can see easily that block will create. This is a block. Okay, input selection screen. This is the text. Suppose you want to create for the radio button also another block. Okay. Here also can create begin of block to end of block. Take it. Let's create 2 and 3. Let's create the text element 002 again. Double clicking on that. I told you already in SAP, whenever or whatever you want to create, just to double clicking on that. वहां पे सिंपली डबल क्लिक करो, हो जाता. ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? रेडियो बटन ग्रुप. रेडियो बटन ग्रुप. ठीक है. And 003 equal to checkbox. ठीक है, checkbox ग्रुप activate. ठीक है. चलो. Now I'm going back, activate the program and execute. If you can see, these blocks are created. Input selection screen, this is one block. A radio button, one block.
checkbox, one block. Okay, this type of block also you can create. That means it can looks like beautiful. Man, for looking wise, they will tell you just create a block. Means for looking wise, you can create a block, or they will tell or not, you can create the functional paper. Okay, you can create this type of things. You can create in reports. Okay, so and one more concept. Suppose in material number, this is your select option. The functional will tell you if the last में जो है ना multiple selection, you just remove this icon. I don't want to this icon and I will not enter multiple selection. If you click it here, this multiple selection, this option is here. He will tell on I don't want. Okay, you just simply remove. Okay, so you can remove by using this code. Select option is here. No extension. Okay, suppose I'm using the no extension. Activate. So what will happen? Let's see. Execute. If you can see, though, this option is gone. If you can observe, last में जो एक icon था ना वो गया. मतलब that is called extension. वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो गया. ठीक है. अभी वो फिर से बोलेगा कि अरे मुझे रेंज नहीं चाहिए. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 डालूंगा. मुझे रेंज भी नहीं चाहिए. You just also remove the range as well. इसको लो फील्ड बोलते हैं और इसको हाई फील्ड बोलते हैं. ठीक है. आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर एज वेल. ठीक है. तो उसको कैसा करना, मुझे रेंज भी नहीं चाहिए. नो एक्सटेंशन, नो इंटरवल्स. ठीक है. एक्टिवेट. एक्सटेंशन में वो चला जाता है. दो इंटरवल में वो रेंज टेबल भी चला जाता है. ठीक है. ठीक है. देखो यहाँ पे भी चलेगा. इट विल बिहेव एज योर इनपुट, सिंगल इनपुट फील्ड ओनली. ठीक है. मगर डिफरेंस क्या है, अभी पैरामीटर में भी सिंगल इनपुट है. सेलेक्ट ऑप्शन को भी मैंने सिंगल इनपुट बना दिया. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? सपोज आई विल नॉट एंटर एनी वैल्यू इन मटेरियल टाइप. मैं मटेरियल टाइप में कुछ भी वैल्यू नहीं डालूंगा, तो इट विल नॉट फेच द रिकॉर्ड्स. ये रिकॉर्ड्स फेच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है. तो वो टेबल से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं लेके आएगा. इट विल बी ब्लैंक रहेगा. सपोज इन सेलेक्ट ऑप्शन यू आर नॉट एंटरिंग एनी इनपुट्स, सो इट विल फेच ऑल द रिकॉर्ड्स. ठीक है. डिफरेंस समझो. लेट मी एक्सप्लेन. select option, select option में if you are not entering in inputs, you are not entering any inputs, so it will fetch all records from table. टेबल से क्या करेगा? पूरा रिकॉर्ड लेके आएगा. ठीक है. पैरामीटर्स में क्या करेगा? If you are not entering any inputs, it will not fetch any records from table. ठीक है. पैरामीटर्स क्या करेगा? कुछ भी रिकॉर्ड नहीं लेके आएगा. सेलेक्ट ऑप्शन क्या करेगा? इफ यू आर नॉट एंटरिंग एनी इनपुट, सो वो पूरा रिकॉर्ड लेके आएगा. ये दोनों का डिफरेंस है, याद रखो. ठीक है. कहां पे पैरामीटर यूज करना, कहां पे सेलेक्ट ऑप्शन यूज करना. ठीक है. ऐसा सेलेक्ट ऑप्शन आल्सो कैन बिहेव इन ए सिंगल इनपुट्स.
इसको भी सिंगल इनपुट आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग सम एडिशनल कोड. अंडरस्टूड? लेट मी एक्सप्लेन अबाउट सेलेक्ट ऑप्शन इन डिटेल. Select option it is a range table. I told range table. ये एक range table है which contain 4 fields. यहाँ पे क्या है 4 फील्ड को कंटेन करता है, मतलब इट कैन होल्ड 4 फील्ड. ठीक है, तो क्या क्या फील्ड है? लो, ऑप्शन, लो, हाई. और दिस इज नॉट लो, दिस इज योर साइन. सॉरी, साइन, ऑप्शन, लो, हाई, ये 4 फील्ड को ये कंटेन करता है, मतलब ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट. ठीक है, इफ यू कैन सी वन स्ट्रक्चर इन SAP, so S11 SCL OPT1 standard structure is there. Click on display. This is the structure actually. Sign, option, low, high. This is a global structure, means in S11 this is structure is there. Throughout SAP you can use. Okay. This, if you can see, transfer structure for select option. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो कि हम थ्रूआउट SAP यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम डेटाबेस टेबल क्रिएट किए S11 में, स्ट्रक्चर क्रिएट किए S11 में, किए कि नहीं किए. दिस इज द ग्लोबल, थ्रूआउट SAP यू कैन यूज. बट इन रिपोर्ट व्हाटएवर यू कैन क्रिएट, दिस इज ए लोकल, मतलब हम रिपोर्ट में भी सेम स्ट्रक्चर का वाला बना सकते हैं. दिस इज कॉल्ड योर रेंज टेबल. यू कैन कॉल ए रेंज टेबल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर ना? डोंट बी कंफ्यूज. पहले सुनो, उसके बाद पढ़ो, थोड़ा ऑब्जर्व करो. ठीक है, यहाँ पे 4 फील्ड ऑटोमेटिक ये क्रिएट करता है. मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट में दिखाऊंगा स्ट्रक्चर में हाउ टू सी. ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ डीबग. सपोज समथिंग रॉन्ग इन योर रिपोर्ट, कहाँ पे कुछ एरर आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई. यहाँ पे 5 लाइन है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे. सपोज इन योर रिपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स, 5,000, 10,000 codes are there. So how to identify? Or that you need to observe the data flow. How the data is flowing. मतलब कहाँ से कैसा डेटा जाता है. You need to observe, and that we can observe in a debug. ठीक है, debug. Debug means what? I will show you. Debug. ठीक है, debug means to debug we can fix the bugs. बग्स मतलब एरर, जो एरर है वो एरर को हम क्या करेंगे, फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, दैट वी विल सी लेटर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेलेक्ट ऑप्शन. सेलेक्ट ऑप्शन विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए रिपोर्ट, बिकॉज इन एवरी रिपोर्ट you have to create one select option. Not every report, like 99% report can use. Because where in the report input selection screen is required. Input selection screen means this screen is your input selection screen. This screen is called your input. Input means you are entering, you are inputting. Okay. This is called your input selection screen, input selection design. Okay. Selection screen also you can tell. No problem. क्लियर? मिस्टर आकाश बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग आ रहा है ना थोड़ा, मतलब रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लाइक यू आर फीलिंग, अरे आई एम अ डेवलपर, आई कैन क्रिएट, है लाइक यू आर थिंकिंग, राइट? हाँ. विराट, शिवराम,
बुझा पड़ुछि ना नहीं सी नहीं Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है sir. दिस इज योर इंटरेस्टिंग चैप्टर ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इन डिटेल अगेन सेलेक्ट ऑप्शन मन रखो एटा बहुत इंपोर्टेंट काहेकि लोक सेलेक्ट ऑप्शन यूज करूछन्ती रिपोर्ट रे किंतु एग्जैक्टली ये कौन करूछि के जानि पारना हैला काहेकि आर काम ये कर दूछि समस्त करूछन्ती किंतु ये एग्जैक्टली करछु कोन तमे जदि इनपुट न दबो ना हैला ये लाइन टा मन रखि दो पहले ये कौन करू टेबल में सब रेकॉर्ड आन दो तुम भाबियो जे मु किछि इनपुट देलिनी ये किन सब जगह आंदा आ काम सेटा तुम इनपुट न देले सब रेकॉर्ड आन दो जदि इनपुट दबो माने स्पेसिफिक रेकॉर्ड आनिबो हैला आ गुड जिंस सेलेक्ट ऑप्शन रो डिक्लेरेशन आमे केमति कले देखो तीन प्रकार अछि हैला मु जोडा कहली तुमको लेटेस्ट वाला कहली किंतु बहुत कम लोग जानछन्ती काहे कि जानछन्ती जमन यूज करनांती मु देखो एडी गुड कोड लिखिली हैला मु आ गुड कोड लिखुची मु कोन करली ऊपर कोड टाको कमेंट करली हैला मु कर देली एडा देखो जेबी मार्टनर मु लिखिची फॉर जेबी मार्टनर माने कोन मु गुटे वेरिएबल डिक्लेयर करली ये यदि वेरिएबल ऊपर डबल क्लिक करबो जेबी मार्टनर टा कोड डिक्लेयर कराय छी सीडी धड़ल केन जिबारी मु जेबी मार्टनर ऊपर डबल क्लिक करले माने हडी हडी आसीला कर्सर ऑटोमेटिक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हैला मु सपोज कोन करले एडा डिक्लेयर एडा भी कमेंट मार देली हैला आकु एबे मते कुओ जेबी मार्टनर टा को भी मिलिबो कि मिलिबोनी देखो एरर आसी देखो एरर आसीबो एरर टा कोन आला से फास्ट एरर टा पहले पढो फास्ट हैला जेबी मार्टनर इज ऑन से जेबी मार्टनर को चिन्नी पालानी के हैला काई सेते डिक्लेयर करिया पडियो मु कहली परा सीन को कहबी तू आकाश को कहि दो आकाश सीन जानते आकाश टा के हेले मु आकाश को फास्ट कहया पडियो भाई आकाश गुड पिलाडी अछि तू ताऊ चिन्ह तो चिन्हेली हैला अननोन से जानि पालानी एडे हैला हेले किन जणा पडियो मु ताऊ डिक्लेयर कर मु आ गुड वे कहबी केमते सेलेक्ट ऑप्शन डिक्लेयर करिया किंतु तमे से रियल टाइम रे के यूज करियो खाली जाने पे कहूची हैला मु इडे कोन करली जेबी मार्टनर टा को बाहर कर देली मु इडे कोन करली इडे तमे कोन करले जे जेबी मार्टनर टा को खाली मार्टनर डाटा एलिमेंट्स जो नेलो मु कोन करली इडे एम ए आर ए मारा हाइफेन मार्टनर एम ए टी मार्टनर हैला मारा मार्टनर ले कोन मारा हो जे तमर गुड स्ट्रक्चर कि टेबल प्लस मार्टनर हो तार फील्ड से कौन करिवो ये स्पेसिफिक टेबल को जीवो तार फील्ड को बाहर करिवो तापर तार एड्रेस को ये रेफर करिवो हैला एमिति जनरल हुए मु ए कोन करली एक्टिवेट करली देखो मारा टेबल ला कोन स्टैंडर्ड टेबल हैला फिर भी देखो एरर आइला द फील्ड मारा इज अननोन हैला ये कौन कला मारा टेबल ला गले चिन्नी पारलानी ये माराटा किए तमे को भाई ना एटा तो ग्लोबल टेबल ला चिन्नी पारलानी कोन भाई मारा टेबल ला कोड यूज करसो करे चिन्ह दो देखो हमें सेलेक्ट कोरी रे यूज करले से चिन्ह देला ना नहीं हला एटा जो सेलेक्ट कोरी देखिबो एटा फ्रॉम मारा भी हम यूज करले से जानि देला किंतु सेलेक्ट ऑप्शन रे जानि पारलानी सेति पाइगा कोन करिवो रिपोर्ट पर एडे टेबल्स मारा हला टेबल्स मारा जदि लिखिबो प्लस सेलेक्ट ऑप्शन रे दबो माने कोन होबो तमर से एररटा आसीबो से पड़ेबो हला ये टेबल्स रो सिंटैक्स कोन करछि जानछ ना इट्स क्रिएटिंग implicit work area implicit work area माने कोन ये उटे मेमोरी एलोकेट करछि इट एलोकेट मेमोरी हला सी कोन करबो उटे मेमोरी एलोकेट करबो टेबल्स करिया द्वारा implicit work area क्रिएट हो उटे एलोकेट मेमोरी एलोकेट करबो जहा पर तमरो परफॉर्मेंस इश्यू वैल्यू उटे जो उटे अछि कांसेप्ट ता ऊपर इफेक्ट पकियो हमें जेहेतु गोटे डेवलपर खाली कोडिंग कर देला हबो नै
आमको देखिया पड़ो जे रिपोर्ट टाको आमे केमिति कोडिंग करिले बेसी टाइम नबनी फटाल से तार आउटपुट टा पड़ी आसीबो कोटे गोटे रिपोर्ट आसीबो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट जोड़ा कि तुमको खाली एग्जीक्यूट हबा पाएंगे मोर देन 5 मिनिट 10 मिनिट्स एमती लागियो हला बेसी समय लागियो आउट तो घंटा लागु दिस हला किंतु तमे रिपोर्ट रे छोटो छोटो जिंस ध्यान रखिया पड़ो ना ना एटा लेखिले मोर मेमोरी एलोकेट हबो जहा फल रे परफॉर्मेंस इश्यू आसीबो मु एटा लेखिबिनी सेटा होचे गुटे गुड डेवलपर रो काम as we are an ABAPer we should understand this type of performance issues this is called a performance tuning आमे कोन करबो परफॉर्मेंस को ट्यूनिंग करिया माने कोन करी और टिके बेटर फास्टर होबो माने टिके जल्दी स्पीड होबो कामडा है ना से जगह भी ध्यान रखिया पड़ो आ खाली एता करी से कोडिंग तो समझ करछन बेटर एटा आज को एमती कोडिंग करूछन किंतु मु कहबी तुम एमती करिवनी तुम खाली जाने पे हम कहदिन नले तुम भाबियो जे सिंटैक्स कोन पे काम हो हैला तुम किंतु केबे रियल टाइम रे टेबल्स एमती यूज करिवो नाही इंस्टेड ऑफ दैट ता परिवर्ते तुम एमती गुटे ग्लोबल वेरिएबल करो जोड़ा कि बहुत कम लोकल मेमोरी करिवो प्लस इंस्टेड ऑफ दैट you just use above syntax ये syntax टा यूज करो है ना मु सजेस्ट करबी गो विथ दैट किंतु लोक सेमते करूचंदी मना कोनी करना दे है ना काई बेले तांके तांकर अभ्यास हे पड़ेलेनी सिंधिया लिख देले हे जाउची मु को क्लियर सेलेक्ट ऑप्शन पैरामीटर हला चेक बॉक्स हला आउ किछ नै एति तुम प्रैक्टिस ये तुमको कहल तुम मुंडो टिणी काले हम देखिबा रिपोर्ट रो इवेंट्स हला डिबगिंग दा हम पर